Hi, hello, good evening. UPSC, who is this from YouTube? May I know your name? Hi, hello, guys. Good evening, everyone. Those who are in a class. Hi, hello, good evening. Guys, we will start our session within 2 to 3 minutes. Okay. I'm waiting for 2 to 3 schools to join here. Soon after they're joining, we'll start our today's class. Cool. And today's topics are like that: potential due to solid sphere, escaping velocity, orbital velocity, and based on that one, few good numericals which are asked in a previous year JEE and as well as a NEET. How to attend the NEET question based on these two concepts I'm going to discuss today. Clear? We'll wait. Once again, I will inform you this all the things. We'll wait for further 2 to 3 minutes. Cool. Hi, JNV Bijapur. How are you all? Hey, good. ಹೇಗ್ ನಡೀತಿದೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ? Am I audible right properly? There is no disturbance from my end. Hope it is good. Everything. Screen visibility. Okay, once again, hi, hello, everyone. We'll start the session, right? There's no problem. Shall we start? Let me know in a chat box once. Am I audible right properly to everyone? Shall we? Let me know through the poll at least once. Guys, please do participate in this poll. It will give the confirmation whether I'm an audible to everybody or not.
That's great. That's great. That's great. Okay, we'll start our today's session, guys. Before that, we'll take a quick recall what we discussed in a previous class. Okay, last class, Abhishek, I think I thought he taught you all potential energy. Correct now? No worries. Today also, I'm going to wrap up the same thing, potential energy, and also we will solve the problems and we will further move on. Clear enough? These are all the topics which I'm going to take today. Which are the potential due to solid sphere. Actually last class हुआ था hollow sphere के लिए potential क्या हुआ था, correct ना? Right? Today we are discussing the potential due to solid sphere and then escaping velocity क्या होता है, orbital velocity क्या होता है, इसके ऊपर numericals. And tomorrow may be the last video of the gravitation. Okay, up to this point, whatever the topics are there in your class 12th electrostatics, I covered everything. Okay, 100% those questions will become definitely. Okay, and escaping velocity and Kepler's law, they are the secondary point. Okay, up to this point everything I covered. Clear है ना? A potential क्या होता है? Due to hollow sphere, due to solid sphere, it will be repeat in a electrostatics also. Do listen carefully. Done. Okay, we'll take a quick recall. Recall में क्या है? First, gravitational potential क्या था? Potential, I told you that in a single point we can't able to define the potential. Right? We need at least 2 points to define the potential. One point B, if I take here means another one point इधर था ये. From B to A, if I'm going to bring one point mass, whatever the work done on that mass, we call that one as an potential. Correct now? VA minus VB, final potential minus initial potential is equal to work done per unit mass. Don't forget this one. इसका SI unit होता है joule per kg. Clear ना? And then we derived the potential difference for a single point. एक मास था इधर और मान लो ये प्लैनेट है, हमारा अर्थ है धरती माता. ओके, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस r. ओके, r पे एक पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल था, वी नीड टू फाइंड आउट. मींस क्या करना है, वी नीड टू ब्रिंग ए यूनिट पॉइंट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट. देखो इधर से इधर तक लेके आए थे हम. करेक्ट ना? If we are bringing from infinity to that point means against the field, then we need to take the work done as a positive. Clear enough? If we are going from P to infinity means work done will be negative. Based on that one, we derived here negative work done, that is minus Gmm by R. Minus Gmm by R. Note down this equation. It is very important for defining the potential energy also. Right? Potential energy define करने के लिए ये equation चाहिए हमको. Clear है ना? And then next क्या था? Relation between electric field strength, sorry, gravitational field strength है, strength and as well as the potential. Strength के लिए symbol क्या था? E. E and potential, इन दोनों को बीच में relation क्या है? Right? We derived this equation by using the work done by using the external force. Right? We got a equation, this one. E is equal to minus dV by dr. Actually, this is the general equation. This is one of the general equation. Correct? I told you. To obtain actually 3 space में, you look at here. This is the coordinate system है ना, एक corner में. X axis, Y axis, Z axis. At any one point means you will use this formula. Along the X axis means you have to use Ex is equal to minus dV upon dx. और else y axis में gravitational field strength find out करने के लिए Ey is equal to minus dV by dy, and z axis के लिए Ez is equal to minus dV by dz. Just you need to differentiate the potential with respect to their axis along the x axis, y axis, z axis. That's it. You will get the gravitational field strength. In a same point, we find out the gravitational field strength for a ring, uniform mass distributed ring of mass m and radius r. At this point we got the equation, this one, right? By using this one, at this point only we find out the electric field strength also. क्या करना है इधर, along the x axis differentiate करना है, right? What I'm saying, differentiate करने से क्या मिला था आपको? Actually this is not the equation, I will write the equation. Okay, no worries. Equation हमको मिला था इधर
minus gm r divided by r square plus x square whole to the power of 3/2. This is the equation we got there. Okay, once you turn your page and you will just cross check this one, you will get an answer. Okay, we already solved this one also. Cool. And later on, yes, gravitational field potential. Okay, potential find out करना है for this given mass at this point p. p के ऊपर क्या करना है? Potential find out करना है. But we know that in initial classes, guys, like this hollow sphere it is. कौन सा sphere? Hollow sphere. From this center at a point p, we find out that electric field, sorry, gravitational field strength. क्या था उधर? minus gm by r square था. Minus gm r square if you keep means it is very good. Okay, because force will be always acting opposite to the displacement. Cool. And here we got the equation of E value. हमको V value चाहिए means इधर एक इक्वेशन है ना, minus dv by dr रिलेशन है ना, या gravitational field strength and as well as the potential, इसके ऊपर रखना है. That's it. Correct ना? Here dv है ना, this value we need to find out. That's why change the relation. A r dr को इधर multiply करो, then dv is equal to minus dr होता है. dv minus dr था, E का वैल्यू पता है minus gm by r square, minus into minus इधर प्लस होता है, minus gr square होता है, gm by r square. And integrating both the side, dv will become v, and then either don't keep my negative sign, the small mistake, guys. Okay, no worries, actually I took this one as negative sign, no problem. Okay, minus gm इधर integrate करना है, किधर से किधर तक? Infinity से up to this point. Okay, and integrating that you will get an answer v is equal to gm by r. Guys, don't worry, today also, yeah, Ballari guys, actually listen, today also we are going to solve the same equations, then you will get an idea for a solid sphere. Okay, I will do everything. Okay, we'll definitely get it. Cool. Okay, this is for the hollow sphere. And then hollow sphere at the surface के लिए क्या आता है? Just same equation था, but r value क्या होता है? Radius of that planet के लिए equal होता है. R value is equal to r को equate होता है. That's it. And inside कहानी बहुत अच्छा था. क्या था inside का कहानी? At this point, if I want to find out the potential means, at this point, actually हमको पता है hollow sphere के अंदर gravitational field strength क्या होता है? Zero होता है. Gravitational field strength zero होता है. That's why while integrating, this value will become zero. Correct ना? But this change in potential है ना, this change in potential remaining case में infinity we are treating that which is very far from the sphere. But in this case, when we considering the point inside the sphere, no, for this point infinity will be surface only. Surface will become as an infinity to this point. Wherever you want to integrate means you have to integrate from radius to this is a position r. This distance only you need to integrate, means r to r distance. That's it. Okay, this dv को expand करके लिखने से vp minus vs मिलता है. vp stands for here potential at this point where we need to find out the potential inside the sphere. vs stands for potential on the surface. Surface के ऊपर potential, correct ना, is equal to 0. And vp value vs राइट साइड के आने से क्या होता है? प्लस vs होता है. बट vs का वैल्यू हमको पता है ना, इट इज ऑन द सरफेस क्या होता है? माइनस gm by r. पुट कर लो इधर, vp वैल्यू क्या आता है? माइनस gm by r आता है. इट सेज दैट गाइस, एक्चुअली आई विल टेल यू हियर. ओके, हियर इटसेल्फ. एक्चुअली व्हेन यू गो आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या आ गया था? पोटेंशियल वैल्यू विल बी minus gm by small r. It is inversely proportional to the r. If the value r is going on further point away from the surface of the mass, means potential will be decreases. Correct na? Exponentially will decreases. Potential is inversely proportional to r from this equation. Clear है ना? But inside surface में क्या था? gm by r था. Inside भी क्या है? minus gm by r ही है. If you're going to take the point at this point, you will get a value of minus gm by r only. Minus gm by r. If you're going to take the point here, you will get the same equation.
If you are going to take the point at exactly center of the sphere, you will get the same point. It is says like that potential is same at all the point inside. इनसाइड में पोटेंशियल क्या है, सेम ही है, मींस कांस्टेंट है बोल रहा है. क्लियर है ना? दिस इज ऑल द थिंग्स व्हिच वी डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस क्लास. होप इट इज अंडरस्टूड टू एवरीवन, राइट? मींस we discussed this one on Friday, I think. Let me know in a chat box. All those things are clear, right? I need a response, guys. Okay, do give a response in a chat box, and I have on a small question also here. Question है इधर. Question क्या है? Is gravitational potential valid for single point? Let me know in a chat box. इधर आंसर बोल दो. सिंगल पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वैलिड है क्या? सोच के बताना. For a single point, I'm not considering the infinity also, only single point. For a single point, potential we can't able to define. क्लियर है ना? हमको 2 पॉइंट चाहिए पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए, राइट? वी विल से एट दिस पॉइंट वीपी, अनदर 1 पॉइंट मींस इंफिनिटी था ना, माइनस इंफिनिटी करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल. ये इंफिनिटी को क्या मानते हैं हम? वी विल ट्रीट दिस वन एज एन जीरो, करेक्ट ना? एट द टाइम वर्क डन पर यूनिट मास. एट दिस पॉइंट वी विल डिफाइन वन सिंगल पॉइंट, बट एक सिंगल पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी कांट एबल टू डिफाइन. क्लियर? क्लियर नो? ओके, ग्राफ कैसे आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए देखते हैं. ध्यान से सुनो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेम क्वेश्चन विल रिपीट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट्स व्हाई. ओके, आउटसाइड में पोटेंशियल क्या आ गया था हालो स्फीयर के लिए? माइनस gm/r. r के साथ पोटेंशियल क्या होता है? वेरी होता है. ओके, सरफेस में क्या आ गया था? सरफेस पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस gm/r. इनसाइड क्या आ गया था? इनसाइड आल्सो माइनस gm/r, मींस कांस्टेंट होता है बोल दिया था मैंने. ओके, विल टेक ड्रा ऑन ग्राफ हियर. दिस इज द ओरिजिन. एक्चुअली ये नेगेटिव साइन है ना, इसलिए मैंने एक्सिस को नेगेटिव एक्सिस में रखा हूं मैंने. ओके, पोटेंशियल विल बी अलोंग नेगेटिव एक्सिस. डिस्टेंस है ना, this is I'm going to take along the x-axis direction. X-axis direction. Now देखो, potential value will be maximum at what point? Up to what point? Up to radius, right? मान लो up to radius, I'm going to take this point. R value will be equal to radius. Up to this point, the potential is constant. कितना? This much. gm/r square itself. It won't change. Correct ना? That's why I'm going to treat this one as an constant value up to this point. Up to R value will be equal to capital R. This is a maximum point. We can say this is a maximum, and we can write this one as minus gm/r. After reaching the surface, if you're going further away from the surface, means it will start to decrease. देखो इधर V is inversely proportional to R. Correct है ना? Then graph should be come out to be like this. Like this. Clear? This is the graph for potential versus distance for a hollow sphere. For a hollow sphere, this is maximum one potential. This is actually V is proportional to 1/r. Clear है ना? Let me know in a chat box. Is it clear? I'm expecting maximum participation from everyone. JNV Ballari, Chitradurga, Rutuja. I'm expecting this one from everyone, guys. Do participate. Or else it will become one way. It will not a good class then. That's why. The fact that I can't use the Zoom because I'm using the YouTube for some reason. That's great.
Okay, we'll continue. Okay, we'll move. Next point है, सेम कॉन्सेप्ट है, वी नीड टू अप्लाई फॉर द सॉलिड स्फीयर. कौन सा स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर के लिए अप्लाई करना है, राइट. वी नीड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल. क्या फाइंड आउट करना है हमको? पोटेंशियल, राइट. एट दिस पॉइंट इज अ सॉलिड स्फीयर. सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? जस्ट टर्न योर पेजेस. Initial class I did this one, minus gm by r square. Same for hollow sphere also, no, कोई changes नहीं है, correct ना. Now you need to find out the value of v, means simple, ये r के साथ क्या होता है? change होता रहता है, right. Potential at this point you need to find out, means we need to bring one unit mass from infinity to this point. infinity में potential क्या मानते हैं हम? 0. Right, what I'm saying. Now we need to find out the potential, means we will use the formula relation between these two. ये दोनों के बीच में एक relation है ना, E is equal to minus dv upon dr. dv upon dr. Actually हमको चाहिए v, that's why change the relation. Hence it will become dv is equal to minus E dr. कोई problem नहीं, just cross multiplication, that's it. ओके हमको पूरा पोटेंशियल चाहिए. अब दिस पॉइंट मींस वी नीड टू इंटीग्रेट दिस वन बोथ द साइड, करेक्ट ना. किधर से किधर तक? इंफिनिटी से पॉइंट पी तक. लिख दो इधर इंफिनिटी टू पॉइंट पी, इंफिनिटी टू पॉइंट पी. आई एम गोइंग टू डिफाइन दिस वन ओनली. नेक्स्ट टर्म वन आई विल सॉल्व वेरी क्विकली. ओके, इधर पोटेंशियल को इंटीग्रेट करने से क्या मिलता है? v मिलता है. लिमिट इंफिनिटी टू p, अपर लिमिट मींस vp माइनस लोअर लिमिट मींस v इंफिनिटी. थोड़ा सा okay. If you are not understanding means please drop a message in a chat box. Sir, explain once again like that. I will explain it. Cool. And then right hand side में actually substitute the e value here. e value substitute करो. Substitute करने से क्या मिलता है? माइनस इंटू माइनस प्लस होता है. इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू p पॉइंट gm by r स्क्वायर होता है इंटू dr. Either r is a variable, that's why we need to integrate the r. gm is a constant quantity, take it outside the integration. Hence it will become gm 1 by r square को integrate करने से क्या मिलता है आपको? minus 1 by r मिलता है, minus 1 by r. and limit will be infinity to p, infinity to p. infinity means infinity only distance. p का distance क्या होता है? up from the center it will be r होता है. Replace this p by r only, no problem. ठीक है ना. Then apply the limit. If you're going to apply the limit means r का प्लेस में r रिप्लेस करता है और एक r का प्लेस में infinity. Infinity value will become 0. Then it will become gm divided by r with a negative sign. Okay, here potential at infinity will be 0. Already I told you. Then potential at point p क्या मिल रहा है? minus gm by r, minus gm by r. सर सेम ही मिल गया. yes, potential will be same for a solid sphere also outside. outside same ही होता है, there is no change. Clear, right? This point is clear. Here also potential at point p at a distance r from the center of the solid sphere will be proportional to 1 by r. r के ऊपर डिपेंड करता है. Let me know in a chat box, is it clear? That's great, that's great. Okay, spirit है हमारा बच्चों के अंदर. right ना? Okay, note on these points. And then next point क्या होता है? On the sphere. Outside the sphere हो गया हमारा काम. On the surface of the sphere क्या होता है? At a distance again r, this r will be actually equal to capital R. Same कहानी है, कुछ भी नहीं चेंज होता है. जस्ट हेलो 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 हेलो, क्या किया तुम? नोटेशन व्हाई इट इज ऑन, आई डोंट नो. ओके कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके. ओके, एंड देन एट दिस पॉइंट वी नीड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल, मींस वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई. ई वैल्यू क्या होता है ऑन द सरफेस? जस्ट रिमेंबर माइनस gm by r स्क्वायर होता है. बोल दिया था मैंने. Again, if you're going to integrate with the help of this equation, minus dv upon
dr, again you will get the potential value will be equal to minus gm by r. कैपिटल R को इक्वल होता है, that's it. कैपिटल R को इक्वेट होता है. क्लियर है ना? सेम, there is nothing is changed. Put integration and do it. Because from the day first से अब तक मैंने छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन किया था. इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है, right? In last class I explained the chain rule also. Well, how to resolve the chain rule in differentiation, right? That's why try to integrate. You will get a potential at this point will be minus gm by r. Clear ना? For the surface. Second case हो गया. ध्यान में रखो. First case में gm by r था, small r. Second case में radius को equal हो रहा है. Third case में क्या होता है? देखो इधर. Third case ऐसा है. From the center at a distance r, ये p के ऊपर हमको पोटेंशियल डिफाइन करना चाहिए. हम ये थोड़ा अलग है. You can't able to say potential inside will be zero, right? We define the potential at this point. Sorry, strength, electric gravitational phase strength. Actually, we defined here. क्या था? Minus gm r divided by under root of. Check it once. What is this once? Inside कहानी r cube था. Sorry. gm divided by r cube. Correct now? This is the gravitational phase strength inside the potential, inside the solid sphere. Check करो एक बार. Check करो. Quickly check करो. Any one of you, just check it. That's it. Okay. Again, we need to calculate the value of potential. Potential calculate करने के लिए क्या करना है हमको? ये दोनों के बीच में इक्वेशन क्या है लिखना है. लिखने से E is equal to minus dv upon dr. Follow me and also try to integrate along with me also. I will integrate this one. Okay, then dv is equal to minus e dr, cross multiplication. Okay, e का value इधर substitute करो, then it will become dv is equal to gm r divided by r cube into dr मिलता है. Correct? Here G, capital M, capital R, these are all the constant quantity. We can't able to integrate. Only the variable thing is small r. Keep in your mind. Okay, we need to integrate both the side. कहाँ से कहाँ तक integrate करना है भाई? That is a matter, no? Inside, when you're getting inside, the infinity point will be shifted to surface. Surface के ऊपर infinity point shift होता है. Then this is will become infinity surface. And point P will be here. Clear है ना? Means surface से point P तक integrate करना है. That's it. Surface to point P, दोनों side. Then dv means V applying the limit S2 means surface to point P is equal to इधर gm is a constant quantity, capital R cube is a constant quantity, and then R को इंटीग्रेट करने से क्या मिलता है? ओके, लिख दो और एक लाइन, कोई प्रॉब्लम है. सरफेस टू पॉइंट बी r इंटू डी आर. करेक्ट ना? नेक्स्ट इधर अपर लिमिट vp माइनस लोअर लिमिट vs. vp stands for potential at that point inside the solid sphere. vs stands for potential on the surface. Clear? And then is equal to, इधर देखो, gm divided by r cube. ये r को इंटीग्रेट करने से हमको मिलता है r square by 2. ठीक है ना? And then here the interesting part is that surface to point P बोला था मैंने. Surface to point P. Surface means this is surface. Up to this point the distance is r. Point P means here the distance is small r. Means we need to integrate the potential from surface to point P means capital R to small r. Keep this point in your mind. We need to integrate this one from किधर से किधर तक? कैपिटल आर से स्मॉल आर तक. इतना ही इंटीग्रेट करना है. क्लियर है ना? इतना ही. ये दोनों बीच है ना. I will show this one with a new color. देखो इधर. These 2 point only we need to integrate. Correct now? Point P if it is lies here means this is will become R. From surface to here only you need to integrate.
right? What I'm saying, you need to integrate between surface to point P. Cool. I hope this point is understood to everyone. Now apply the limit on this equation, then you will get left hand side में Vp and Vs is equal to Gm divided by R cube. Upper limit means small r ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, r square divided by 2 minus lower limit क्या है, कैपिटल है रहा है, मीन्स r square by 2 हो गया, खत्म कहानी, कोई प्रॉब्लम नहीं. We need to find out the potential at this point, करेक्ट ना, पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, बट हमको पता है Vs का वैल्यू, राइट? Vs का वैल्यू क्या होता है गाइस, सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना था, लास्ट पेज ओपन द लास्ट प्रॉब्लम मींस लास्ट केस, क्या लिखा थे हम, माइनस ऑफ Gm बाय R लिखे थे, कैपिटल R, करेक्ट ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, इट विल बिकम Gm बाय R, राइट? व्हाट आई एम सेइंग, करेक्ट ना, इज इक्वल टू Gm डिवाइडेड बाय R क्यूब, इधर R स्क्वायर बाय 2 माइनस कैपिटल R स्क्वायर बाय 2. अब तक देयर इज नो डाउट, आई होप everything is fine. If you had any doubt up to this point, means let me know. Hope it is good and fit for everyone. Fine, right? Now what I am going to do, I am going to take this term to right hand side लेके जा रहा हूं मैंने, VP चाहिए ना मुझे, that's why वाइस प्रिंसिपल नहीं, potential at that point, okay, will be equal to Gm divided by R cube into R square by 2 minus R square by 2. इसको इधर लेके आने से क्या हो रहा है, इधर माइनस Gm by R हो रहा है, ठीक है ना? Up to this point there is no doubt, right? Cool. Next point क्या है? Now I'm going to do one interesting fact here. I'm going to take this Gm by R cube as a common from these two terms. This is one term, this is the second term. ये दोनों टर्म में Gm by R cube कॉमन ले रहा हूं मैंने. ओके, देन क्या आता है देखो, Gm by R cube लेने से, ओके, इसके अंदर क्या मिलता है, R स्क्वायर बाई 2 माइनस R स्क्वायर बाई 2 मिलता है. इधर क्या होता है देखो, जस्ट R स्क्वायर होता है, जस्ट R स्क्वायर. कैसे, जस्ट मल्टीप्लाई दिस वन टू हियर. इफ यू मल्टीप्लाई मींस क्या होता है, इधर Gm R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R क्यूब था ना, R स्क्वायर R क्यूब में R मिलता है, देन द रिमेनिंग टर्म विल बी सेम आता है, राइट? व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाई आई पुट हियर R स्क्वायर. क्लियर, क्लियर, राइट? ओके. And meanwhile, if you're getting any doubt, means please let me know in the chat box. Cool. And then इधर देखो क्या करना है इधर, ओके, R स्क्वायर बाई 2 माइनस R स्क्वायर है, ये दोनों टर्म सॉल्व करो, यू विल गेट माइनस 3R स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना? यस, गुड गुड गुड, थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स. ओके, Gm बाई R क्यूब, इधर क्या मिलता है देखो, R स्क्वायर बाई 2, इसमें माइनस 3R स्क्वायर बाई 2 मिलता है, 3R स्क्वायर बाई 2. आई विल चेक वेदर देयर इज अ स्पेस. यस, इट इज देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब तक क्लियर नो, अप टू दिस पॉइंट? नेक्स्ट स्टेप क्या करता हूं मैंने, VP शट लिख दो, नो कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान से सुनो. VP इज इक्वल टू, इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करता हूं, और एल्स, ओके, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, देखो इधर मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइन, ओके, मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइन मींस माइनस Gm बाई R क्यूब, इधर माइनस R स्क्वायर बाई 2 प्लस 3R स्क्वायर बाई 2 मिलता है, 3R स्क्वायर बाई 2 मिलता है. कीप दिस equation in your mind. I will write this one in the next page. ओके, नेक्स्ट पेज इधर लिखूंगा मैंने, देखो ध्यान से सुनो. VP इज इक्वल टू माइनस Gm बाई R क्यूब, इधर माइनस R स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 कैपिटल R स्क्वायर
by 2 मिला था हमको, करेक्ट ना? जस्ट आई विल रीअरेंज दिस टर्म्स इनसाइड इट, इनसाइड का टर्म रीअरेंज करता हूं, देन पोटेंशियल क्या मिलता है देखो, माइनस जीएम डिवाइडेड बाय आर क्यूब 3r² by 2 माइनस r²/2, कुछ नहीं, पॉजिटिव साइन ही है, देखो इधर पॉजिटिव साइन है ना, इधर भी पॉजिटिव साइन है 3r² by 2 में, इधर नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, कुछ प्रॉब्लम नहीं. दिस इज द वन ऑफ द वंडरफुल इक्वेशन, दिस इज अ 8th वंडर इक्वेशन. हाँ ब्रो, 8th wonder of the universe. Okay, you need to, at any cost you need to buy this one, or else you need to note down this formula in your mind. Okay, this is very important. Gravitational potential due to a solid sphere, कौन सा sphere के लिए है? Solid sphere के लिए inside का कहानी है, किधर? Inside में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितना था? माइनस GMR डिवाइडेड बाय r³ था, राइट? डिफरेंट था ये भी, पोटेंशियल भी अजीब आ गया है, माइनस GM/r³ 3/2r² माइनस r/2 1/2r², whatever it may be. Okay, try to remember this one. Actually this is the concept which is asked as a JEE question in 2016 paper. Okay, hope it is clear, right? Hope it is clear. Let me know. Rutuja, Chitradurga, Bijapura guys, Ballari, everyone, I'm asking to everyone, is this concept is clear, right? Simple सा concept है, हमको ये मिला है, right? You need to differentiate this one, sorry, integrate this one with respect to the limits. Limits के ऊपर क्या करना है? Integrate करना है. Clear है ना? Right? Okay, great. And I'm going to give one homework. Up to today I explained more than 6 graphs. 6 graph मैंने explain किया था. Here also graph is there. Okay, this is the graph you need to plot. कौन प्लॉट करना है? आपको छोड़ रहा है मैंने, ನೀವೇ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ. This is a homework. क्या है? Homework. This is a fixed one. Don't miss. Try to draw the graph. Try to search it in a textbook. Same graph in electrostatics. Same concepts in electrostatics. Ditto होता है उधर. Copy paste. Terms only change. Clear? इधर GM है by r³ है, उधर क्या होता है? K³/r³ होता है. That's it. We'll move further. Okay, now we'll come across the gravitational potential energy. How I told you that potential, how we can't able to define for a single point. In a similar way, we can't able to define the potential energy also. Energy also we can't able to define for a single mass. Single mass के लिए energy define करने के लिए बहुत मुश्किल होता है. We can't able to define it. Okay, we can't define the potential for a single mass. But you know guys, actually in I think Newton's laws of motion or else work power energy, right? Work power energy में already I think someone with took the class, I hope. Okay, he might be told like that this potential energy को हम represents करते हैं U symbol से, capital U. Okay, or else this change in potential energy we will call change in potential energy value will be equal to negative of the work done, we will call. What is that? Potential energy or change in potential energy is equal to negative of the work done. Negative of the work done. Clear है ना मेरा बात? ध्यान से सुनो, कोई चिंता मत करो. क्या है? एक्चुअली मानो ये दोनों को डिस्टेंस है r, इसका मास था m1, इसका मास था m2. Actually now they are here. Before that, these two masses, imagine at this point, a point पे ऐसे था m1 m2. Actually guys लिख दो ये point को,
gravitational potential energy, it is depending upon the configuration. It depends on configuration. Configuration means how the structure of a masses will be arranged. देखो इधर ये दोनों मास अटैच्ड हो गया है, ये दोनों के बीच में एनर्जी होता है ना, ये एनर्जी अलग होता है when they are separated. No, at this point इसका एनर्जी अलग होता है. That's why we are saying this gravitational potential energy is depending upon their configuration, how they are arranged, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है. राइट ओके, देख इधर था, मान लो ये पॉइंट क्या है, इंफिनिटी है. ये पॉइंट क्या है, मेरा स्क्रीन इज डांसिंग एक्चुअली. ये पॉइंट इज इंफिनिटी. इंफिनिटी में दोनों अटैच हो गया है. मैं क्या कर रहा हूं, ये m1 मास को इधर लेके आ रहा हूं, लेके इधर फिक्स कर दिया. नाउ आई एम गोइंग टू मूव द m2 हियर at a distance r, at a distance r from the m1. m1 से r डिस्टेंस के ऊपर m2 को भी लेके आ रहा हूं. एट दिस टाइम m2 लेके आने के टाइम में क्या होता है, मुझे वर्क डन करना पड़ता है. करेक्ट ना, वर्क डन करना पड़ता है फॉर दिस मास m2, पर यूनिट मास m2. इधर फोर्स कौन सा फोर्स लगने वाला है गाइस, एक्सटर्नल फोर्स लेके हम एक्चुअली ये मास के वजह से, मींस फर्स्ट मास के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे होता है टुवर्ड्स द मास. इफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग मींस दिस m2 मास विल स्टार्ट टू एक्सेलरेट. एक्सेलरेट ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ accelerate, it should be constant speed maintain ಮಾಡಬೇಕು. That's why what we will do, opposite direction external force we will apply. करेक्ट ना. हियर अप्लाइड फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स. देखो इधर ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए इक्वेशन gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होता है. करेक्ट ना. दिस ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स. करेक्ट ना, राइट व्हाट आई एम सेइंग. ओके, देखो इधर ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. सुनो, सेम कहानी है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. राइट व्हाट आई एम सेइंग. एंड डिस्प्लेसमेंट आई टोल्ड यू दैट ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लेते हैं. फ्रॉम दिस पॉइंट टू अप टू दिस पॉइंट, आर इधर है, आर का डायरेक्शन इधर है, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन इधर है. दैट्स व्हाई विल पुट हियर वन नेगेटिव साइन फॉर अ ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लियर है ना ये बात, राइट. and then moreover while calculating the work done क्या करते हैं हम, इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू r तक विद द एक्सटर्नल फोर्स इनटू dx. ये ऑलरेडी कर दिया है हम. ओके 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 ओके, सुन ध्यान से सुनो. आई विल एक्सप्लेन अगेन आई विल एक्सप्लेन यू ऑल. इधर एक मास है, इधर एक मास है, m1 m2, ये दोनों मास है m1 m2. ओके, दिस इज एट इंफिनिटी. फर्स्ट आई विल ब्रिंग m1 हियर. m1 को इधर लेके आ गया मैंने, इधर छोड़ दिया. ओके, इसका एक फील्ड होता है इधर, इधर एक फील्ड होता है. ये फील्ड के अपोजिट मैंने क्या करना है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके ये m2 मास को इधर तक लेके आना है बाय द एक्सटर्नल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या अप्लाई करना है मुझे, एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज टू मूव द मास इन अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है. it should not be accelerated. Kinetic energy should be zero ಆಗಿರಬೇಕು. Neat question, right? Kinetic energy should be zero, velocity should be constant, acceleration should be zero. ಆ ತರ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ, ರೈಟ್. ಇವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಂದಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ m2 ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ r ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಾಸ್ m1 ಇಂದ r ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ m2 ಮಾಸ್ ನ ತಂದಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್. करेक्ट ना. वर्क डन विल बी इक्वल टू f एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना dx. मान लो dx इंटीग्रेट करने से, एक्चुअली आई टोल्ड यू दैट डे, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಐ ಥಿಂಕ್.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ dx ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ dx. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೀನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ರೈಟ್, now you need to integrate this one. Integrate ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? infinity to r. At this point तक you need to integrate dr. f external value क्या होता है? Actually f external, how much the gravitational force is there, no, that much only we need to apply. Right, value क्या होता है? fg value is equal to g m1 m2 by r square होता है, correct ना? But here force will be, gravitational force will be towards the mass m1, means in this direction. Displacement will be in this direction, opposite hai. That's why we are taking here minus fg. External force मान लो, कोई problem नहीं, correct ना? Put this value here, put this value here, fg value or f external value. Work done will be come out to be just solve this one. Okay, minus, sorry minus होगा ना, क्या होगा था? Okay, just a minute. Okay, work done will be g m1 m2 by r square will become g m1 m2 by r square. Actually guys, we derived this one by taking x as a distance. X as a distance we took. Okay, just check, already we derived this one. Same thing we are applying here also. Okay, work done क्या आता है? My g mm by, sorry, r आता है, r square नहीं, just r. Right, according to the equation क्या था? Potential energy equation, change in potential energy will be equal to negative of the work done बोला था मैंने. Change in potential energy is equal to negative of the work done. Negative of the work done, correct ना? Okay, change in potential energy means potential energy final किधर? इधर. Configuration हो गया ना, this is potential energy of a final. इधर था ना, this is potential energy of the initial one. Right, write down here, potential energy final minus potential energy initial will be equal to negative of the work done. However, we know at infinity potential energy क्या मानते हैं हम? Zero मानते हैं, always zero, correct ना? Hence it will become zero. Remaining thing will be uf is equal to negative of the work done. Work done का value already पता है, इसको इधर substitute करो. Then it will become minus g m1 m2 divided by r. This is the potential energy for a given configuration. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ನಡುವೆ ಯಾವ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಮಾಸ್ ನಡುವೆ, we need to find out, means we will use this formula, minus g m1 m2 by r. Clear, right? Just we need to find out the value of work done. Work done, negative of the work done we are treating as an change in potential energy. Change in potential energy. Clear, right? Yes, good. You want to find out this equation, means once again go for the gravitational potential due to, sorry, potential due to a solid sphere at a single point ಅಂತ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. Okay, at this point you will get this equation. Yes, VP formula used to find. I didn't get you. I didn't get Ballari guys. Could you please repeat your question again? Your question repeat ಮಾಡಿ. Okay na? Meanwhile, देखो इधर. What is the potential energy due to this given configuration? And question पूछा है इधर. What will be the potential energy? उधर actually I took only 2 masses there. Okay, इधर कितना है? 3 masses है, m1 m2 m3.
Okay, for this given configuration, what will be the potential energy? They might be asked. Where VP formula is used. Potential due to point. That is only we will use for a hollow sphere or a solid sphere, or else how they will ask? No, मान लो this is an object which is like a solid object. From the solid object center से r distance के ऊपर at a point P, find the value of potential. Potential find करो ये point के ऊपर पूछता है. When they will ask like that, no, at this point you need to find out the potential, means point P के ऊपर first you need to find out the potential at infinity. Infinity से एक point mass, a mass का a बड़ा mass है ना, इसका mass capital M होता है, a test mass small m होता है. ये test mass को इधर से इधर तक लेके आना है आपको. Okay, at this point V infinity you have to treat like a zero. Okay, like that you need to calculate for us given question, right? कोई problem नहीं. Actually, what are the things I solved? No, they are the questions. They are the questions. Cool. Actually, in electrostatic Gauss law आता है. Based on the Gauss law, you will going to find out the potential, right? At the time, you will get an idea how to do and everything. This is a basic. If you know these things, means you will do there in a better way. Find out करना है इधर पहले. क्या find out करना है? Potential find out करना है. This is mass 1, mass 2, mass 3. Okay, हमको potential energy find out करने के लिए एक equation पता है. U is equal to क्या होता है? Minus G m1 m2 by R. Correct now? And guys, for a given configuration, you will find out the potential energy, and while adding the potential energy, don't go through the vector addition, because energy बोल रहा है मैंने. Energy is an what kind of quantity? May I know? Is it vector quantity or scalar quantity? Energy. Energy is vector quantity or scalar quantity. That's great. Okay, scalar quantity में direction add करना जरूरत नहीं है. First, मान लो this is the given configuration. एक configuration में कितना set बनता है देखो. पहले m1 m2 ये दोनों को वजह से इन दोनों को बीच में क्या होता है? Potential energy होता है. एक हो गया. And then 2 3 ये दोनों को वजह से इन दोनों को बीच में potential energy होता है 2. And then coming to the 3 1 ये दोनों का बीच में क्या होता है? Again potential energy will be exist between them. We need to calculate all and we need to find out the final potential energy. That's it. Here मान लो potential energy 1 m1 m2 के ऊपर यही होता है. Then potential energy 2 देखो minus G, this is a set I'm going to take 2. Okay, m2 m3, then it will become m2 m3 divided by R, right? And then third potential energy will be equal to ये दोनों का बीच में है m3 m1, then it will be minus G m3 m1 by R. Okay, total energy क्या होता है in this system? That is total energy will be equal to u1 plus u2 plus u3 होता है. Correct ना? u1 का value minus G m1 m2 by R minus plus into minus minus होता है. Again minus G m2 m3 by R, again minus G m3 m1 by R. They will give the values, mass values they will give. m1 is equal to 1 kg, m2 is equal to 2 kg, m3 is equal to 3 kg. Separation distance R value will be equal to 1 meter. ऐसे देता है. Okay, at the time put the values and you will get the answer. Okay, that is U total, right? Hope it is understood, right? Scalar quantity है. Scalar quantity means 1 plus 2 plus 3 means कितना होता है? 3 3 is 6. 3 plus 3 6 होता है. Correct ना? ऐसे ऐड करना है, right? But configuration find out करना बहुत important होता है. देखो इधर इधर कितना configuration बनता है बोलो. I want to know potential energy of this system. Each side will be ये. क्या है? Each side of this will be ये. Okay, कितना configuration? 4. शाबाश, good. देखो
u will be equal to minus g m1 m2 by r. This is the potential energy formula, correct ना? We need to apply for everything. 1 2 3 4 masses है, 4 masses है. देखो इधर 1 से 2 एक कॉन्फ़िगरेशन, 2 से 3 सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन, 3 to 4 third configuration, 4 to 1 fourth configuration, and again 1 to 3 also one is there, this is also configuration, and 4 to 2 this is also 4 configuration. Totally 6. कितना configuration हो गया? 10 कैसे यार? 10 कैसे? 6 configuration हो गया. कितना? 6. 10 नहीं, 66. oh god, oh good. 6 configuration हो गया, ठीक है ना? Based on like that you need to calculate. Clear? Okay, 6 configuration में देखो और एक twist है इधर. Twist क्या है ना? 4 configuration के लिए R value will become A only. R value become A only. But diagonal होता है ना? देखो ये side ये है, ये भी ये है, but ये diagonal value क्या होता है? √2 times ये आता है 2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए. ओके, ध्यान रख के करना पड़ता है क्वेश्चन को. क्लियर? Shall we write this one equation for this configuration? Shall I write? You will get an idea. That's why quickly I will write. Okay, and moreover escaping velocity I will do today, orbital velocity will do tomorrow. कोई problem नहीं, correct ना? minus g m1 m2 by a पहला हो गया, करेक्ट ना? नेक्स्ट वन माइनस जी m2 m3 by a, दूसरा हो गया, ये दोनों हो गया. देन तीसरा वन माइनस जी m3 m4 by a, this fourth also done, m3 m4. then fourth one coming to here minus g m4 m1 by a, करेक्ट ना? अगेन नेक्स्ट क्या है? m1 and m3 का बीच में भी है, उसका भी वैल्यू माइनस जी m1 m4 डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स ये, डायगोनल √2 टाइम्स ये होता है. एंड देन माइनस जी m2 m4 डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स ये. दिस इज द टोटल एनर्जी. ये वैल्यूज में g इज कांस्टेंट, टेक इट आउटसाइड. mass value they will give 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg and ये value will be 1 meter 2 meter होता है. वो values इधर substitute करो, आंसर फाइंड आउट कर लो. क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट? इज इट क्लियर? लेट मी नो क्विकली. चार्ट बॉक्स में बोल दो एक बार, इज इट क्लियर? राइट, दैट्स गुड. इट इज m3. किधर ब्रो? PM1. हाँ, राइट. यस, राइट ऋतुजा, गुड. दिस इज m3. ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक होता है. ओके, कूल. अंडरस्टैंडिंग राइट फॉर एवरीवन? दैट इज अ मैटर, फाइनेस्ट मैटर. इट शुड बी अंडरस्टूड टू एवरीवन. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट एस्केपिंग वेलोसिटी. ओके, आते हैं एस्केपिंग वेलोसिटी के ऊपर. इधर मान लो दिस इज आवर अर्थ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ. ओके ना? वी आर स्टैंडिंग एक्चुअली हियर. एक्चुअली आई एम स्टैंडिंग ऑन द अर्थ सरफेस. मेरा हाथ में एक पत्थर है, क्या है? स्टोन है. एक्चुअली आई एम वेरी सैड. दैट्स व्हाई व्हाट आई विल डू, आई विल थ्रो दिस स्टोन. व्हेन आई थ्रो, दिस स्टोन विल बी फॉल डाउन हियर with some velocity. I'm going to call this velocity as an v1. क्या है? v1 है. Now further और गुस्से से ತುಂಬಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಎಸಿತೀನಿ ಸ್ಟೋನ್ ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. It will comes to this point, it will be v2. Further again I will throw this stone and it will comes to the point here. This is the velocity v3. Oof, ನೀವೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಯಾರ್ जस्ट फॉर क्या बोलता है, इमेजिनेशन बोल रहा हूं. ओके, ट्राई टू थिंक यू आर स्टैंडिंग देयर. ओके, नाउ further velocity compared to v3, greater the velocity of v3, I'm going to throw this stone
At this time, the stone will start to move like this around the earth. This is I will call this one as an fourth velocity. Fourth velocity, when I'm going to throw, no, at this velocity, stones start to revolving around the earth. They will ask this question, what kind of orbit it will make? It is a circular orbit. Circular orbit, fourth one. Fourth one kya hai? Circular orbit. I will tell you further way. Okay, satellites are revolving, no, that is the fourth velocity mein hai. What I draw here, that fourth velocity mein satellites are revolving. Okay, next kya hai idhar? Okay, further, if I throw the stone more than the fourth velocity, then what will be happen? May I know from your end? What will be happen if I throw like this? If I throw more than the fourth velocity, then the stone will never return to the earth surface. Earth surface के लिए नहीं आता है. गया, टाटा, goodbye. चले गया. Okay, means earth gravitational force होता है ना अर्थ का, it will actually crosses that gravitational force with that velocity. We call that velocity as an escaping velocity. When projected stone crosses the gravitational field strength and it moves away from the gravitational field, means it never comes to the earth again. Again, it will never comes to the earth. Which velocity we throw? No, to move the object against the, means to overcome from the gravitational field. That velocity we called as an escaping velocity. Hope it is clear to everyone now. Everyone clear, right? Actually, let me know in a chat box. Chat box. Okay, good. And this escaping velocity creates parabolic path. कौन सा path? Parabolic path. Parabolic path में चलता है. That's good. That's good. That's good. Okay, time 5 minutes hai. I will try to finish this one. Okay, the answers now. Okay, listen. Here at this point, if it is go away from the gravitational point, means we call this point as an infinite. कौन सा point है? Infinity. Infinity में velocity क्या होता है? Decrease होता है. Potential भी zero होता है. Correct ना? Velocity भी decrease होता है. Constant velocity and potential will be also zero. Now we need to find out, means calculate escaping velocity. Means we will take on concept here. That concept we called conservation of mechanical energy. क्या है? Conservation of mechanical energy. This is a concept we will take to derive it. Clear है ना? Okay. क्या है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? कंजर्वेशन आपको पता है, इनिशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी. इनिशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी. देखो इधर, मान लो एक ऑब्जेक्ट था ना, मास व्हिच आई एम गोइंग टू थ्रो फ्रॉम द अर्थ सरफेस. एक्चुअली इट इज प्रेजेंट हियर एट ए डिस्टेंस r, एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर. इसके ऊपर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी भी होता है प्लस काइनेटिक एनर्जी भी होता है. when I'm throwing at the moment, इसके साथ कौन कौन होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. when I throw, this will become parabolic path and it is escaping from the gravitational field. इसके पास इधर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. दिस इज व्हाट? फाइनल. दिस इज इनिशियल. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मींस क्या होता है? ये दोनों को ऐड करना, मींस इक्वल करना है. इनिशियल विल बी इक्वल टू फाइनल. इधर इनिशियल देखो, फास्ट में करता हूं मैंने. पोटेंशियल एनर्जी U इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम किधर? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा है ना, सेम तरीका. पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ माइनस G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r है, प्लस काइनेटिक एनर्जी व्हेन यू स्टार्टेड टू थ्रो,
Kinetic energy formula of mv square is equal to potential energy at infinity में again minus gm small m divided by r का डिस्टेंस क्या होता है, infinity होता है, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैंने बोल दिया था वेलोसिटी विल बी जीरो, constant velocity, hence kinetic energy will become zero, and gmm by infinity this also will become zero. Okay, then ये दोनों टर्म में ये टर्म को मैंने राइट हैंड साइड लेके जाता हूं, then it will become of m small m v square is equal to minus g capital M small m divided by r होता है, small m से small m कट गया, तो if you're going to multiply this one here means v square will be equal to 2 इधर आता है, करेक्ट ना, सॉरी दिस इज प्लस, माइनस था इधर से प्लस होता है, 2 gm divided by r मिल गया. This velocity, this is the velocity, particular velocity which escapes the object from the gravitational field. That's why I'm representing this one as an VE. Yes, right. That's great. You're observing the class, guys. Okay, VE, correct now. This is a particular velocity which escapes the, no, it is correct. GMM now. Okay, got it. Okay, got it, guys. Okay, and if I'm going to take square to right hand side means escaping velocity will becomes to under root of square will becomes to right hand side means root आता है, 2 gm by r होता है. This is the equation valid for all the planets. All the planets you can use this formula, escaping velocity. Just imagine you are on a moon, moon के ऊपर throw करो, okay, ये formula use करो, mass of the moon use करो और radius of the moon use करो, आता है, correct ना. But for particular cases, if you want to find out the escaping velocity for a planet Earth only means simple सा आसान क्या है, हमको पता था g is equal to gm by r square, acceleration due to gravity. मैंने बोला था, बहुत सारे बारे में बोला है मैंने, ये r square इधर मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, g r square is equal to gm आता है, इसको इधर रिप्लेस करो ये इक्वेशन में. ओके, क्या आता है देखो इधर, ध्यान से सुनो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल फिनिश द क्लास एट दिस पॉइंट ओनली. VE इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 gm के प्लेस में क्या लिखना है हमको, gr स्क्वायर मींस gr स्क्वायर डिवाइडेड बाय r है ना, r से r मर गया, देन एस्केपिंग वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gr. दिस इज वैलिड फॉर अ अर्थ सरफेस. This is valid for Earth surface. Means itna velocity say if you're going to throw any object means that object will be overcome from the gravitational field and it will say for us tata bye bye. Okay, it will never comes to Earth again. And then you might be asking that, sir, what is that velocity? Simple है velocity. इधर g वैल्यू पता है ना सरफेस के ऊपर, g वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, r वैल्यू पता है 6400 किलोमीटर, राइट. पुट द वैल्यू, you will get a escaping velocity, it will be around 11.2 kilometer per second. We need to throw any object with a speed of 11.2 kilometer per second to cross the gravitational pull, right. Gravitational pull से overcome करने के लिए we need to throw any object with a velocity of 11.2 kilometer per second. At that time only the object will say tata goodbye. Clear है ना up to this point? Tomorrow we will discuss about the क्या डिस्कस करना है कल, हाँ, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड देन केप्लर्स लॉ and only one concept is remaining, satellites. Okay, satellites के बारे में बताता हूँ. Clear है ना? These are all the topics which I'm going to take tomorrow. Clear, right? Up to this point, how was the class? How you feel? Is everything is fine, right? I need feedback from your end. अभी चाहिए मुझे. Shall I launch one poll? A poll में participate करो. A poll में participate करो. 5 members are there.
I'm expecting the participation from 5 members also. कैसा लगा ಹೇಗಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್? Hello, are you there? Amma God. Options are ulta palta many times. Okay, sometimes. Guys, you are judging. Thank you guys. But ಪೋಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ sometimes. ಹಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು sometimes. I'm from Karnataka, Kannada. It's okay, cool. I will upgrade. Teacher makes class interesting, enjoyable sometimes. Okay, teacher clear doubts as well sometimes. Okay, problem 9. In coming class I will try to overcome from those points. Okay, then it's fine, and we'll see you in a next class. Until then, take care. Bye bye. Okay, bye.